Welcome to my little black dress or LBD workout. In this 6 weeks, I am going to try to lose 3.5 kgs of weight. So it's day 1. It's going to be a great day. बहुत बड़ा वर्कआउट है आज का. क्वाड्स एंड काफ्स करेंगे हम. Hi guys, we're back on day 2. It's upper body day. So I've just entered the gym. Let's see how it goes. You have to stay very motivated. यहाँ पे discipline आता है. Welcome to day 5 of my little black dress workout series. Okay, so guys, this was week 1. We finished the entire week of training. तो हमने इस वीक में 2 बार लेग वर्कआउट किया है. We did quads and calves. On another day we did glutes and hams. अपर बॉडी पे हमने मेजर मसल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया. वी केप्ट द मॉडरेट वॉल्यूम देयर. एंड फॉर योर शोल्डर्स एंड आर्म्स अगेन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिमुलस, नथिंग ग्रेट. फिर एक पूरा दिन हमने एब्स, कोर एंड मोबिलिटी वर्कआउट पे कॉन्सेंट्रेट किया, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. Also, we had a metabolic conditioning workout to just keep the cardiovascular health in check. So overall, बहुत अच्छा week रहा. This is a new training block. I'm super excited about it. So next week again, the program remains the same for 6 weeks, like I've told you. We made some yummy pancakes with the whey protein from Givon. I totally smashed it. पूरा खत्म कर दिया 2 मिनट में. And of course there was a little bit of peanut butter on that for that extra yumminess and also for good fats. Yes, we used oats to make the pancakes. So instead of maida, we use oats. So a lot of good fiber, soluble fiber, always a great choice. Okay, that's done. Day 8 जो था, it was quads and calves day. बहुत अच्छी energy थी. That's primarily because the workout, the pre-workout was so good. तो मेरे squats में depth, माने range बहुत अच्छी थी. I squatted 60 kgs with really good form. So I was very happy about that. फिर जो मेरे front foot elevated lunges थे, उसमें मैंने इस week में 10 kg each hand में use किए हैं. So that was a good progression. तो डे 9 पे मैंने किया मेरा जो अपर बॉडी मेन लिफ्ट्स का वर्कआउट. इसमें भी आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने सब लिफ्ट्स में पाउंडेजेस इंक्रीज किए. एंड द हाईलाइट वाज दैट ऑन माय फ्लैट डंबल प्रेसेस आई पुश 20 kgs each for 10 reps. So this was a personal best. I was very happy with that. So guys, days 10 और 11 unfortunately मेरे लिए अच्छे नहीं रहे. This is the day when I fell sick. मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया. I just was on medication and rest and मैं बहुत सारा डिहाइड्रेट हो गई थी, इसलिए I had to have a lot of electral etc during these days. So day 12 पे guys मेरी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो गई थी. So I decided कि मैं वर्कआउट रिज्यूम करूँगी. So even though ये स्केड्यूल से नहीं गया, I tried to
to do the workout which was the most priority for me, जो है glutes and hams. लेकिन I kept it a little easy, so मैंने जो CAS glute bridge है वो बार से नहीं किए. I used a dumbbell instead, but still rep range high रख के I got a really good burn in my glutes. So day 13 पे मैंने किया shoulders and arms. इसमें I just kept very light weight and a little bit more high repetitions and cardio after that. So मेरी energy थोड़ी थोड़ी करके return हो रही है. I'm still not 100%, but I hope कि nutrition पे, खाने पे, hydration पे थोड़ा focus करके I should be 100% soon. So on the last check-in मेरा weight था 65.05 and on this check-in, this week का check-in, it was 64, which was really great. So almost 1 kg of loss. मैं बहुत ही खुश हो गई थी. But I was expecting it because in the previous check-in I was a little bloated. So वो bloating निकल गई. Of course there is also fat loss to go with that. This is weekly update number 3. Day 16. So on this day I did make it to the gym. Gym में बहुत अच्छा workout हुआ. Energy was great. I think pre-workout is really helping me. So the level 10 is amazing. I'm totally gaga over it actually. And I'm not just saying it. So upper body में again the poundage मैंने last week का जो था I maintained that for all the sets, so that's a great progression that I did. All the lifts were very good and just as a little bit extra मेरे पास time था, I had a little bit of energy, मैंने rack pulls भी किए, so that was again very exciting. And yes, I added a little bit of cardio, 20 minutes cardio after the workout. So guys, day 18 पे था मेरा glutes and hams day. Again, energy was a little low, but then मैंने pre-workout लिया था, so I was able to pull through very nicely. So the level 10 is a lifesaver for me on such days. So CAS glute bridge पे momentum was very slow, which is great. मुझे अच्छा form और more time under tension maintain करना था, which I did. Again, lifts are very good in terms of poundage. So guys, as a change on this Sunday, I made a treat for myself, which you will see. It's a shake, it's a smoothie rather, and it's super healthy और ये convenient है because it does not take a lot of time to make. ये आप on the go carry कर सकते हैं. So if you're busy or you haven't had time to cook a meal or something, you can easily make this, carry it with you and have it anywhere. So मेरे जो oats हैं I'm going to weigh them. So this is my powdered whey, 30 grams. Yogurt, 1 heap scoop of the Gibbon whey protein, and my most favorite, look at this, isn't that amazing? I'm going to put 2 spoons. Okay guys, so we're going to blend this now. If you want, इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं to get the consistency right. Putting some ice in guys to make it extra fresh. My smoothie is ready. I'm not even going to wait till I go out of my kitchen. I'm going to have it right now. Oh my god, I'm not kidding. Fantastic. Chocolate, peanut butter, nice and cold. Yum. The good part about it is that इसके जो ingredients हैं smoothie के, so you have your peanut butter, which is giving you good fats. You have your whey protein, of course, great source of protein, and then इसमें oats use किए हैं. So this is giving you soluble fiber. So like a complete meal
on the go, super yummy, super tasty. So last week around the same day मेरा weight था 64.1 and on this Monday it was 63.7. So yes, weight drop हुआ है, but it was just 400 grams, which is okay. There's nothing bad at that. Like मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि weight loss sustainable होना चाहिए. It should not be aggressive. So the week started with day 22. ये week 4 चालू हो गया था. And now because we are already in the second half of the challenge, बहुत focus बढ़ गया है. So workout wise मैंने जो rest periods है हर सेट के बीच में वो भी टाइम करना चालू किया है. सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेरी वेरी इंटेंस. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फीलिंग एंड लुकिंग, आई एम फीलिंग बेटर एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग लीनर. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. और अभी जो फोकस है इट हैज़ शिफ्टेड अ लॉट. I mean, it was always on protein, but now it is all the more on protein and also on veggies and fiber. So guys, day 24 was my third workout of that week. You know, it is metabolic conditioning. So abhi mera adaptation is quite good in terms of the cardiovascular fitness. So initially मैंने three rounds किए थे, फिर I increased it to 5 rounds, then to 7. So I am adapting really really well. So also I was craving momos a lot on this day. I love momos. So yes, it is possible कि कभी कभी even on a diet you can have things which you like, जो necessarily आप रोज़ नहीं खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी you can. So for that day मैंने planning करके रखी थी, मैंने calories save up की and at night I enjoyed my momos. So guys, as you know, अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं. This is like almost at the end of the finish line. So I am going to be at full throttle, full force and full focus. So guys, as you know, मेरा जो apple cider vinegar है by Fitness का, I have it in various forms. तो meal के पहले तो लेती हूँ, that you've already seen, and I also use it on my salad. So जो salad dressing होता है, I like to make a vinaigrette and make it a little tasty and put it over my salad, and it is amazing. You don't have to buy any fancy vegetables, just use जो भी घर पे है. So I have cauliflower, peas, ये boil किए हैं पहले से. I put onions, carrots, tomatoes और थोड़े जो मूली होती है horse radish, I've used that, and I'm going to add some walnuts chop किए हुए. That's done. So ये this is all the salad ingredients. Now the main stuff. I'm going to use my magical apple cider vinegar. Just going to shake it pehle. 2 teaspoons I'm going to use. इसमें I'm going to add a little bit of honey, pepper, salt. Just mixing it and it's done. Voila. So guys, as usual Mondays को मैं weight check in करती हूँ. The last check in that I did, that was day 14, was 63.7 kgs और day 21 का जो weigh in था that was 63.4. So yes, only a difference of 300 grams, which is okay. I was expecting that. This is the time of the month where I expect कि थोड़ा bloating हो जाएगा, but that is completely fine because it dropped after that. So we'll see how much it is in the next weigh-in. There is no need to worry कि maybe some days, you know, like the weight did not drop too much or something. If you're consistent, वो थोड़ा plateau होके then it will drop. So always be patient with the process. So day 29 was the first day of this week. ये मेरा quads and calves day होता है, as you know, but due to PMS I had a lot of insomnia. मैं सो नहीं पाई रात को. So because of that also the energy was quite low, but I still pulled through. I did my quads and calves workout. So day 30 was the second workout of the week, upper body major muscle. So guys, as I said, मुझे ये week पे बहुत सारा insomnia हुआ था. So what I used to do is मेरे sessions होने के बाद I used to come home, have my breakfast and take a small power nap.
उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता था. एंड ऑफ कोर्स माय लेवल 10 बाय गिबॉन वाज एक्सेलेंट. इट गेव मी गुड एनर्जी थ्रू द डे. सो मैंने मेरा वेट ट्रेनिंग वर्कआउट किया, उसके बाद आई मैनेज टू डू कार्डियो. सो गाइज, डे 31 ये मेरा थर्ड डे ऑफ द वीक था. एज यू नो, आई डू माई मेटकॉन वर्कआउट ऑन दिस डे. आई डिड दैट. और मुझे रोइंग करनी थी, अपनी रोइंग टेक्निक थोड़ी परफेक्ट करनी थी. इट वेंट रियली ग्रेट एंड आई think rowing is a very good full body cardio exercise as well. So if you have a row in your gym, please use it. It's amazing. So guys, today Sunday पे मैंने बनाया ओट मील. उसमें एज यू सॉ प्रोटीन है, हमारा वे प्रोटीन, एंड देर इज़ ऑल्सो द पीनट बटर. सो आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन क्योंकि इसमें आपके सब मैक्रोज एक मील में कवर हो जाते हैं. सो ओट मील से सोल्यूबल आपको फाइबर कार्ब्स मिलते हैं. पीनट बटर इज़ ऑफकोर्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट, एंड देन यू हैव योर वे प्रोटीन. इससे कोई अच्छा भी सोर्स नहीं है प्रोटीन के लिए. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3, इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी एंड इट्स सो यमी. इट टेस्ट लाइक अ डिज़र्ट. आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं आप खुद को डिप्राइव कर रहे हो. सो या, इट वॉज अमेजिंग एंड अ फुल मील इन अ बोल. A1 aces. So good. Have to try it. So guys, day 22 पे मेरा लास्ट चेक इन था. I weighed in at 63.4 kgs and on day 29 I was 62.6. So I've lost a lot of bloating going down, and I will continue to lose. So guys, the beginning of this challenge मेरा weight था 65.05 kg and at the end I reached 60.60 kg. So I managed to lose 4.5 kgs almost. ये मेरे टारगेट के 1 किलो से ज़्यादा है. सो गाइज, मसल टोनिंग ऐसे कुछ चीज़ नहीं होती है. सो बेसिकली देर आर 2 थिंग्स यू नीड टू डू. यू नीड टू बिल्ड मसल, हार्ड मसल ओवर द ईयर्स. और फिर जब फैट कम होना चालू होता है, सो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर, द मसल्स अंडरनीथ आर रिवील्ड. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मैंने बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 10 से 12 सालों से वेट ट्रेनिंग की है. सो मसल बिल्डिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी. और अभी जो फैट कम हो गया है, सो नाउ द स्ट्रक्चर इज़ लिटिल बिट मोर एविडेंट. सो येस, दैट इज़ हाउ आई टोन my muscles. So guys, when I decided to do this series earlier, मैंने सोचा कि what have I got myself into, मैं क्या कर रही हूँ. ये सब करने की आदत नहीं है. मतलब the task itself is formidable to show yourself losing weight and you have to do it. Of course scientifically कैमरा के सामने बात करने की आदत भी नहीं थी. So guys, I just want to add कि you have to make your goal a priority. Your life will center around it. अगर आपके पास प्लान नहीं है definite, so it's very difficult to achieve योर गोल. ऑल्सो इसके वजह से आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत टाइम से नहीं मिल पाई हूँ. आई एम रियली मिसिंग दैट. एंड ऑल्सो योर इमोशनल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जर्नी. सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए. एंड यू नो, जस्ट डू योर बेस्ट, कीप इट फोकस्ड एंड इट विल वर्क फॉर यू. You have to always remember never to hate your body. Okay, it's the only temple that you have to live in. Also because of the weight loss, मेरा जो poise और confidence है वो पहले से improve हो चुका है. And when you are confident, ये जो confidence है आपके बाकी के जो areas है life के, उसमें spill over होता है. So I think one of the main takeaways मैं लूँगी is that never second guess myself. और जो भी opportunity life में आए वो आप grab कर लो. सो गाइज, अभी 6 वीक्स एक्सट्रीम डाइटिंग के ख़त्म हो चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक अ डाइट ब्रेक विच डज नॉट मीन कि मैं कुछ भी खाऊंगी. सो नेक्स्ट ईयर आई होप टू यू नो गेट इन टू अ बिल्डिंग फेज. आई वांट टू बिल्ड मोर मसल्स ऑन माई लेग्स. पहले मुझे लगता था कि मेरे लेग्स बहुत सॉलिड हैं, अच्छे हैं, बट व्हेन आई लॉस फैट आई सॉ कि हाउ श्रंक दे वर लुकिंग. सो नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फोकस ऑन बिल्डिंग गुड लेग्स, गुड ग्लूट्स, एट्सेट्रा.